Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. Hope all of you are doing well, preparing for the upcoming examination with full gist and enthusiasm. This is a video session on daily news and editorial analysis dated 18th of November. Through this video session, I'll be discussing the important news and editorial both from the Hindu and Indian Express. So this session will give you the complete analysis of the news and also give you the further point that is relevant for the examination. This session is going to help all the aspirant who will be appearing for the Civil Services examination, State Public Service Commission examination and one-day examination conducted by various agencies of the Government of India. So let's get started with a detailed discussion. Before starting the discussion, I'll give you the highlights of the news that I'm going to discuss with you today. For today, the first important news about the COP28, which is there to be held in Dubai. We'll see the details. What is the expected outcome from the COP28? Now, the other news is about the part of Global Alliance or the Global Fuel Alliance. Biofuel Alliance की बात करें, India has invited many other countries to join it. Third important news talks about the deepfakes. Prime Minister has raised concern about the deepfake and the part of AI technology. So ethical issues need to be taken into consideration. The second last news talks about the RBI that has even come up with the regulations with the bank stocks, and RBI have come up with tightening of the rules. And the concluding part will include the editorial, that is the state of economy, the temper and euphoria. So we'll conclude the session with editorial, understanding the details about the economy and how the performance was there during the COVID-19. Now let's get started with the detailed analysis one by one. So the first news is about the COP28. This is going to take place in Dubai. The venue is important. UAE, country is UAE. City की अगर बात करें, that is Dubai. COP28 is something which will be very important. COP27 के बाद, after the COP27, this is 28, the number goes on. It stands for Conference of Parties. So 23 के जो Conference of Parties है, that is going to take place from 30th of November, right? 30th of November till 12th of December. This is the time frame or the duration upon which it will take place in Dubai in United Arab Emirates. Something again very important that will call for more part of the robustness in terms of sustainable environment and even the financing for the environment. तो क्या क्या expectations है कोविड खास करके अगर COP28 की बात करें, we'll see detail to that and how India can even substantially contribute in that. That will be the discussions. Now context of the conference की अगर बात करें, जिस तरह से devastating effect हुई है, climate change, specifically for any conference of party which is the theme is the climate change only. तो climate change पे खासा ध्यान देने की बात की गई है, and we have seen that COP27 has specifically called for the loss and damage fund (L&D) की बात की गई थी. I have already made a discussion to L&D. I'll discuss that also in a while. Now, World Meteorological Organizations ने जुलाई में कहा था that heat in the global level has even reached to a level which was even not expected. तो काफ़ी ज़्यादा heat report की गई है and drying up with the heat has caused this particular year. Now the initial global stocktake report जो कि सितंबर में रिलीज की गई थी, that called for 5-year evaluation process. Every 5 year down the line we need to check that what is the performances, whether the target that has been actually set, क्या ये वो target meet हो पा रही है या नहीं meet हो पा रही है, किस तरह से हमें उस target को meet करनी है. So every 5 year there will be a kind of review that need to be done. Now the periodic assessment aims to measure the global progress, जहाँ पे 2015 की जो Paris Agreement है, this is something which is again important. If you look at the part of Paris Climate Agreement की बात करें, यहाँ पे -2 डिग्री या फिर 2 डिग्री के कम ही जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उस तक रखने की बात की गई है. And even we are not achieving that 1.5 to 1.2, this is the minimum bracket which has been actually anticipated, but कई बार इससे नंबर 2.5 के आसपास बढ़ी. Now this is said to be the hottest year recorded for this particular year. और कुछ countries, specifically United States, China and Southern Europe, has been reported with a surge in the temperature, specifically this summer. Now what can we expect from COP28? See, अगर इंडिया की specifically बात करें, India during the G20, India has specifically given focus on the part of environmental sustainability. We have come up with the Global Biofuel Alliance, GBA भी जिसे कहते हैं. इसके बारे में भी discussion एक separate news है that is coming after this. Now
What is expected from COP 28? ये आपको लिए जानना जरूरी है बिकॉज देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन मेंस एग्जामिनेशन, राइट, कि आउटकम क्या हो सकती है COP 28 की और ग्लोबल ऑर्डर पे किस तरह से काम करने की जरूरत है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू हैव अ ट्रिपलिंग इफेक्ट ऑन द रिन्यूएबल इकोनॉमी. किस तरह से? बिकॉज इफ वी आर फोकसिंग मोर रिन्यूएबल एनर्जी and ultimately जो carbon के emissions हैं, the carbon emissions will ultimately be reduced, right? So to check upon the part, we need to have a tripling effect of the renewable energy. The global installed capacity of renewable energy is 3,400 gigawatt और इसे ट्रिपल करने की जरूरत है बाय 2030 और सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस होगी रिन्यूएबल एनर्जी की बाय 70%, राइट, दिस इज द टारगेट, और सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करनी है फ्रॉम द करेंट रेट ऑफ 28%. Now 28% is the current rate. We need to reach out to a target of 70%. तो ट्रिपल आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं. The proposal has received the backing from the G20 nation. जो G20 के member countries हैं, they have actually backed this nation that yes, we need to achieve, we need to triple it on the part. और 60 countries ने इसके support में भी अपने proposals को रखा है. And the final approval will be there once the meet that is there in COP 28 जो दुबई में होनी है, वहां पे ये सारी approvals की बात की जाएगी. Now finances of loss and damage fund, actually as I've told you, ये loss and damage fund जो formation हुई थी वो COP 27 में हुई थी, राइट, इजिप्ट में. दिस वाज अ प्लेस वेयर दिस एक्चुअली वाज अडॉप्टेड. शर्म अल शेख वाज अ प्लेस, राइट. तो यहाँ पे लॉस एंड डैमेज फंड की एक्चुअल में बात हुई है. द फंड इज बेसिकली मीन टू प्रोवाइड द कंट्रीज विद हेल्प, और जो भी इम्पैक्टेड कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे आर बीइंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द डेवलप्ड कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उसके कंपनसेटेड में लॉस एंड डैमेज फंड बनाने की बात की गई है. एंड द फंड विल बी देयर अराउंड 100 बिलियंस. आई टेल यू दैट ऑल्सो. Now, the Dubai meeting is expected to fund the loss and damage fund, जहाँ पे small isolated nation, primarily जो beneficiaries nations हैं, उनको concern जो उनके हैं वो address करने की जरूरत पड़ेगी. Delivery of 100 billion part of the fund which is essentially required. This will be something that will be taken into consideration. जो rich nation है, by rich nation I mean the developed nation which is already there. They need to contribute to the developing countries so that कि जो climate finance के losses उन countries ने किए हैं उनको वो compensate कर पाए with the financial part, right? So this is how the entire thing is expected from the COP 28. Now global stock take, जो भी कोशिशें हैं उसको दोबारा से और regenerate करने की कोशिश करनी है. So we have already the target under the Paris Climate Agreement. 2015 में जो Paris Climate Agreement हुई थी उस टारगेट को वापस से regenerate करनी है, and even to make a progress the which is there. Specifically अगर आप देखें पिछले 5 सालों में बहुत सारी ऐसी जो सब्सटैंशियल प्रोग्रेस होनी थी वो हुई नहीं बिकॉज ऑफ द कोविड-19 ऑल्सो. बिकॉज ऑफ द कोविड-19 द पेस वाज नॉट देयर. नाउ दिस 28 मीटिंग COP 28 will give more impetus on the part of global stock take. Pull down of the fossil fuel, this is something which is again important and inevitable. अगर हमें अचीव करनी है क्लाइमेट पोल्यूशन या फिर क्लाइमेट चेंज में जो प्रॉब्लम्स हो रही है तो हमें फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करना ही होगा. So the phase out reductions will be there in the fossil fuel, and this will be again a topic of discussion in the Dubai meeting. By Dubai meeting, I mean to say by the COP 28, right? And the disagreement still persists between the resolutions of the Dubai, which is unlikely to take place. But again, every country, every member country has to substantially contribute in the building of a sustainable environment and building of a sustainable global environment, which will ultimately help in the part of climate change reductions and emissions of the carbons. Now moving ahead, India has invited the Global South to join the Global Biofuel Alliance. Something very important, GBA की अगर बात करें, ये एक लैंडमार्क इवेंट है ड्यूरिंग द G20. इंडिया ने इसे G20 के टाइम पे लॉन्च किया था. इंडिया की जो प्रेसिडेंसी रही है G20 की, दिस वाज समथिंग मेजर अचीवमेंट दैट वी हैव देयर, राइट. सो इंडिया हैज एक्सटेंडेड द इंटिवेशंस, द जो खास करके अगर जो इन्विटेशंस हैं वो और भी कंट्रीज को दी गई हैं, एंड दिस कंट्री विल आल्सो ज्वाइन एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस. सो विल सी विच कंट्रीज आर एक्चुअली बीइंग इनवाइटेड ऑन दैट, एंड इन्विटेशंस के बाद ऐसा होता है कि बहुत सारे कंट्रीज वापस से ज्वाइन करते हैं एज अ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस. सो वी हैव टू सी हाउ दिस विल फंक्शंस. नाउ क्या है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की अगर बात करें, ये एक इनिशिएटिव है जो इंडिया ने एक्चुअल में कंसेप्चुलाइज किया है with the alliance of the government, international organization and industries to facilitate the biofuel, right? Biofuel is again something very important. This is the future. Biofuel ही future है आने वाले समय में. और जो global alliance है that will promote biofuel
द ग्रुप ऑफ G20 विल डेफिनेटली, दीज आर द मेंबर कंट्री, दैट इज द पार्ट। उसके अलावा और भी जो मेंबर कंट्रीज होंगे उनको भी पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाएगा। द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एम्स टू फैसिलिटेट द एडॉप्टेशन ऑफ बायोफ्यूल वर्ल्ड वाइड। ऐसा नहीं है कि इसकी जो कन्फाइनमेंट है वो सिर्फ इंडिया या फिर मेंबर कंट्रीज तक की होंगी, इसे वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोर करने की बात की है। सो वी हैव टू टेक इट एट द ग्लोबल लेवल। The Global Biofuel Alliance has a top producer like country like Brazil is one, United States, and a market trade which is something which will be obtained with the part of biomasses. The alliances is presently with 22 member countries. अभी present में 22 members है. As you know, G20 के साथ साथ जो African Union है that has also become the member. So we are now G21, but 12 international organizations are also taking part in this. Now, establishment of Global Biofuel Alliance की कुछ basics की बात करें, specifically in Indian context. Now, this is again important for examination. अगर examination point of view से देखें Indian context में, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी relevant होंगी. So, आइए, जो इंडिया ने इथेनॉल प्रोडक्शंस की कैपेसिटी को बढ़ाने की बात की है बाय 12.4 बिलियन, मोजेलस बेसिस पे डिस्टिलाइजर्स और कैपेसिटी बढ़ानी है, ग्रेन बेस्ड डिस्टिलाइजर कैपेसिटी हैज टू बी इंक्रीज। इंडिया, ब्राजील and the part of United States account for 85% of the global ethanol productions, and this is how India actually E20 की बात करें, E20 is a part of fuel when जहाँ पे 20% ethanol और 80% पेट्रोल यूज होनी है, उसकी भी आउटलेट को बढ़ाने की बात की इंडिया ने by 2025, and India to contribute 25% at the global energy demand till 2040. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइटल इंफॉर्मेशन है, दीज आर फॉर प्रीलिम्स एंड स्पेसिफिकली फॉर मेंस एग्जामिनेशन, जहाँ पे कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स आप यूज कर पाएंगे एज अ फोकल पॉइंट। Now moving ahead, Prime Minister against the misuse of deepfake technology. Even a video that was there for the celebrities, Prime Minister himself was there in some videos playing Garba. So उसको लेकर के Prime Minister ने concern raise किया, and Prime Minister has flagged the issues that AI और जो deepfake technology है, I mean I have already make a separate video on deepfake के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुई है। तो ये कंसर्न है इथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर जनरल स्टडीज़ पेपर 4 की बात करें तो इथिक्स में भी आपसे केस स्टडीज़ पे सवाल पूछे जा सकते हैं। सो व्हाट आर द गवर्नमेंट मेजर्स दैट दे आर एक्चुअली टैकलिंग विद द पार्ट ऑफ डीप फेक एंड एआई फ्रॉड दैट इज टेकिंग प्लेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंट्रोल मेजर्स देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसाइड किया है। सी इन दिस रिस्पॉन्स स्पेसिफिकली द मिनिस्ट्री, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, दे हैव कम अप with the circular and advisory for all social media company। जितनी भी social media companies हैं या फिर जितने भी social media platforms हैं, उनके लिए advisory रिलीज की गई है। This is under section 66D of the IT Act, जो IT Act पुरानी है, that is of 2000, that is put in place। और यहाँ पे cheating में किसी भी तरह से अगर चीज़ें की गई तो उसके लिए actions होंगी। Stipulate the maximum punishment for 3 year imprisonment and 1 lakh rupees तक की फाइन है। The advisory has been put it to द IT इंटरमीडियरी रूल, जो कि डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के जो रूल्स हैं वो भी एप्लीकेबल होंगे। एंड फर्दर द रूल 3(2)B विद द इंटरमीडियरीज मस्ट प्रॉम्प्टली टेक एक्शन विद इन 24 आवर। इस प्रोविजंस के अंदर विद इन 24 आवर दे हैव टू टेक एक्शंस एंड कंप्लेन रिलेटेड टू द कंटेंट इन्वॉल्वमेंट द इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी IT रूल भी दिया है, IT रूल इज ऑलरेडी एप्लीकेबल। कुछ पुराने रूल्स भी हैं, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। So together this will mount for more stringent rules and regulation when it comes to deepfakes and artificial intelligence. Just to tell you, इंडिया की कोई पॉलिसी अभी AI पे है नहीं। We do not have a dedicated policy with AI। कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, बट स्पेसिफिकली जो AI रूल, जो IT रूल्स बनाए हैं, उसमें सारे प्रोविजंस भी रखे गए। We definitely require a separate rule for AI। जिस तरह से आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, यूरोपियन यूनियन के पास अपनी AI के रूल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैड इट्स ओन रूल, तो उस तरह से इंडिया को भी कोई एक सेपरेट रूल लाने की जरूरत पड़ी। नाउ मीडिया टू एजुकेट पीपल, दिस इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज कैटेगोरिकली सेड कि जो मीडिया हाउसेज हैं, मीडिया हाउसेज कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग पीपल अवेयर। जो अवेयरनेस है वो लोगों को पहुंचाने में मीडिया काफ़ी हद तक मदद कर सकती है, एंड दे कैन इवन एजुकेट द पीपल। मेनी डीपफेक जनरेटेड AI assistance part is creating problem, and Prime Minister himself said that एक वीडियो उनके वायरल हो रही है जहाँ पे वो गरबा परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूरिंग नवरात्रि सीजन, which is a deep fake video which was in circular, right? Now the other news, bank stock fall as RBI tighten the lending rules। lending rules को देखते हुए RBI ने strict rules बनाए हैं
specifically the default, the part of loan which is accumulating is creating problem. So lending को लेकर के खास करके आरबीआई ने काफी स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं, एंड दिस अप्लाइज टू द एनबीएफसी, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन पे एप्लीकेबल होंगे, स्पेसिफिकली बजाज फिनसर्व या कुछ और ऐसे कंपनीज हैं जो कि इसमें है, सारे पे एक्शंस ली है आरबीआई ने. So the increase part of the risk weightage is taken into consideration. आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि जो increased risk weight है of unsecured consumer loan, specifically this is with regards to the consumer loan, जिसे CLP कहते हैं, including this has been increased to 25%, जहाँ पे पहले 100% हुआ करती थी, इसे बढ़ा करके 125% कर दी गई. The Consumer Credit Commercial Bank of the NBFC attract the weight of 100%. Now it has been revised to 125%. और आपके लिए समझना ज़रूरी है what does RW mean. RW means risk weighted. इसका मतलब होता है that the number of amount the bank must keep aside for a loan that is required by the RBI. तो इतने अमाउंट उनको रखने पड़ते हैं आरबीआई के साथ एज अ रिजर्व फॉर्म में. अगर किसी तरह से फ्रॉड हुई, बैंकरप्सी हुई, तो वो पैसे को वापस रिकवर की जा सके. Now, what is the impact of this decision which was taken by RBI? इसके क्या impact होगी? The increase in the risk weighted will have the consumer credit exposures, खास करके अगर commercial banks की बात करें, outstanding with other banks which include the personal loan, the part of excluding कुछ चीजें exclude है, जैसे housing loan, education loan, vehicle loans, loan for gold and jewelries are excluded, right? In addition to this, the credit received from the bank will be taken into consideration. मैंने आपको बताया पहले 25% अभी बढ़ाई गई है, जो पहले 100 थी उसे 125 किया, और जो 125 थी उसे 150 कर दी गई है. बट कुछ एनपीएफसीज अलाउड हैं, जैसे एसबीआई एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और उसके अलावा बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड. दीज टू आर द एनबीएफसी दैट इज एक्चुअली अलाउड टू प्रोसीड फर्दर. Now, moving ahead with the editorial for the day, the state of economy, temper, and euphoria. We'll see the details how the economy was actually performing. Post-COVID economy की क्या performance रही है. अगर global forecast की भी अगर बात करें, if you look at the global forecast, how India has been performing, we'll see the detail to that. Now, क्या क्या चीज़ें देखनी है. फर्स्ट, कोविड-19 की क्या इफेक्ट रही इकोनॉमी में, ग्रोथ किस तरह से बढ़ रही है चाइना के कंपैरिजन में, क्रेडिबिलिटी कितनी है एचडीआई की, एंड द वे फॉर. नाउ, सेमी एनुअल रिपोर्ट रिलीज की गई है बाय द आईएमएफ, एंड द टाइटल ऑफ द report is, this was released by IMF. The title is Navigation's Global Divergence for October 2023. इसमें प्रोजेक्ट किया गया कि इंडिया की जो ग्रोथ है that is expected to be around 6.3%, right, from the previous one of 6.1. तो बहुत ज़्यादा estimations ऊपर नहीं है, सिर्फ 0.2% की fractions changes देखी गई हैं. But the positive revisions है that validate India's short-term economic management. बट जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको और ज़्यादा पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. दे नीड सम कंक्रीट एक्शन वेयर इकोनॉमी इज सस्टेनेबल इन द लॉन्गर रन. नोटेबली कुछ सक्सेसफुल एक्सटेंचर्स हैं, लाइक आईएमएफ हैज़ ऑल्सो लोवर्ड द जीडीपी ग्रोथ फॉर इंडिया, और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, इन्होंने चाइना के लिए भी ग्रोथ को कम किया है 0.3% के आसपास, जो कि फाइनली है 4.2. Now, COVID-19 की क्या इकोनॉमी में इम्पैक्ट रही है. आई मीन मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. देयर वर डाउनटर्न इन द इकोनॉमी, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट रहे थे इकोनॉमी पे. सो इकोनॉमी वाज वर्स्ट परफॉर्मिंग ड्यूरिंग कोविड-19 एंड इंडिया वाज अ वर्स्ट परफॉर्मेंस. और बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे, बीट मैन्युफैक्चरिंग, बीट एग्रीकल्चर सेक्टर, सारे परफॉर्मेंसेस में लो रहे, नेगेटिव रहे. ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2020, इंडियाज जीडीपी हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड टू 25.6%, राइट. एंड इवन जो रियल टाइम इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर देखें 6.8% के आसपास थी, और ये 1920 में 2.8% थी. उस टाइम पे भी इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा कम नहीं थी, बट कोविड के बाद चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट हुई. नाउ, द ग्रोइंग डेफिसिट विद चाइना. इफ यू लुक एट चाइनाज परफॉर्मेंस, बेसिकली एशिया में अगर बात करें, द कंपैरिजन बिटवीन इंडिया इज कंपेयर्ड विद चाइना ओनली. तो चाइना की कैसी परफॉर्मेंस रही है. So the concern is that India is susceptible to the soaring deficit with China, right? और इंडिया की जो इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी है दैट डिपेंड अपॉन द नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट की अगर बात करें, इफ यू कैलकुलेट नेट एक्सपोर्ट, हाउ डू वी कैलकुलेट, वी द एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट से हम नेट जो पार्ट है एक्सपोर्ट को वो निकालते हैं, राइट. सो दिस हैज बिन डिक्लाइनिंग शार्पली. द डिपेंडेंस ऑफ चाइनीज इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग इज सीम स्ट्रक्चरली not easy corrected with the change of relative prices.
Actually चाइना की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड फॉर एनी सेक्टर इफ यू सी वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना on many other things. The mirror image of the rising import has been steadily declining for the industrial growth. 13.1% के आसपास रही थी 2015-16 में, and at current is negative at 3.5% for 19-20. Now, credibility of HDI, we need to take into consideration जो Human Development Index है. Human Development Index is also a factor. So the discussion on social development is a contagious between the official expressions और जो reliable contested multi-dimensional poverty measures हैं, वो दोनों में contradiction है कि क्या actual में development हुई है, जो खास करके ऐसे लोग जो below poverty line थे क्या उनमें कुछ per capita income में बढ़ोतरी हुई है, because COVID-19 has something which has devastating effect. Instead, जो यूएन के डेवलपमेंट प्रोग्राम है फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज बीन मोर क्रेडिबल इन एक्सेप्टिंग द पार्ट ऑफ मेजर्स. द वैल्यू ऑफ इंडिया एचडीआई हैज बीन मॉडरेशन 6.45 टू 2018 और 2020-21 में ये बहुत ज़्यादा नहीं बट 6.0.633 के आसपास ही है. Now the way forward, how and why India should look forward with the part. अगर इंडिया की बात करें, fastest growing economy है in the Asian economy, we are the fastest growing. उसके अलावे वो ग्लोबल ऑर्डर पे भी जो पेस है हमारी वो काफ़ी अच्छी है, राइट. सो एस्पिरेशन इज देयर विद द मिडिल एंड इनकम कंट्रीज बाय 2047 इंडिया विल अचीव अ प्लेनरी पार्ट ऑफ अचीवमेंट. काफ़ी हद तक सब्सटैंशियल प्रोग्रेस होगी और इंडिया को अपनी एस्पिरेशंस को मीट करने में ये ज़रूरी है कि हम सारी चीज़ों पे काम करें. उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टारगेट्स है, जो नेट जीरो एमिशंस की अगर टारगेट की बात करें, स्पेसिफिकली नेट जीरो एमिशंस टारगेट विच इज सेट फॉर 2070, दैट ऑल्सो नीड टू बी अचीव्ड. और क्लाइमेट रेजिलियंट प्रोसेस में हमें बात करने की जरूरत है ताकि जो बॉटम हाफ पॉपुलेशन है वो भी उस पर काम करे, एंड इवन वी कैन रीच दैट टारगेट सो दैट the part of employability, the part of startup, the part of economy development which is there is at the substantial pace, right? This is how India can definitely make a progress by 2047. Now moving ahead with the answer discussion for the yesterday questions, कल के जो सवाल हैं उसके correct options. For question number 1, the correct option is A. मैंने आपसे पूछा था river dolphin के बारे में. Statement 1 correct है. Again the statement 2 that is incorrect, और statement 3 भी incorrect है, that Indus dolphin population in Pakistan doubled due to joint stakeholders. तो ये कुछ correct incorrect option है. आप चेक करें आपने क्या correct option मार्क किए. Second question NMDC के बारे में, it's like something statement 1 is incorrect और statement 2 correct है इसकी, that is one of the world lowest cost iron producer. The statement is correct. Now today's MCQ, आज के जो सवाल हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और अपने कमेंट जो आंसर्स हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बताने हैं. So the first question is, consider the following statement regarding the electoral trust scheme. The first statement is the trust scheme is established by the business and the sole purpose for redistributions, collection and other purpose of individual and with the political parties. The Election Commission of India is actually approving the scheme. Firm only registered under 25 of the Firm Act 1956 is able to raise the electoral trust. So how you can participate in the question answer? Just आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, उसके बाद जो भी आपके करेक्ट ऑप्शंस हैं वो आप लिखें और कमेंट सेक्शन में बताएं. Those will be marking the correct option. I'll be highlighting their comments in the discussion section in the next video. जो दूसरी सवाल है, that is about the carbon border adjustment. It's a component of the Fit 55 by Initiative 2030. This aim to reduce the carbon emissions with the import commodities, same carbon with the part of manufacturing with the EU, right? You can pause this video, read out the statement slowly, and और जो correct options हैं वो आप हमें ज़रूर comment sections में बताएं that what is the correct option down below. So this was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, queries about test series, admissions, programs, any other queries about optionals, you can even reach out to us. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching. We'll stay tuned for another session also in the coming videos. For that being, you put your best possible efforts. आने वाले upcoming prelims examination के लिए अच्छे से तैयारी करें. We are there to help you out. Thank you so much for watching.